Welcome to match number 2. JK Warriors taking on Sultan Warriors Baramulla. It's Warriors up against each other. Let's join the action on JK Sports Time YouTube. Moreover, Delgate Sports Club on Facebook. And catch the action. We have two big teams up against each other. It's Warriors taking on Warriors. The Sentinels will fight it out here, sweat it out. The opening pair, I think one is Lala. He's from Badgaon. Lala, he was exposed by Delgate, by Kashmir Cup Season 2. The way Lala scored 83 in his inaugural game here. In his first game, that was exhibitional. Here is Said Sagar once again. There is pace, fast and furious Sagar. Lala trying to dab it, no connection. A dot ball. 2 for none. We are in over number 1. Crowd in good numbers. It's hot out here at center. We're using the Sam turf, where JK11 Shupian defended 150. They prevailed by 14 runs in the end against the likes of Sky Stars. JK Warriors put into bat. They are here to give the target to Sultan Warriors, Baramulla. A team coming from Town of Mountains. Sagar on your screen right now. Credit to the two teams and the two officials. Not easy to officiate game under certain circumstances when it's unbearable heat out here at TRC. It's hot and humid. Lala is getting ready to face the next one. Is the wicketkeeper batter. Lala keeps it away to cover, not for runs again. There is Samir Bell. JK Warriors need a good start. Shahnawaz Malla is in the side. Shahnawaz Hussain, I think. And Gawar Malla is the part and parcel of the side. And the two guys energetic. Station house officers in the lineup. 2 for none after 4 balls as we are in over number 1. Lala facing the likes of Said Sagar. दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर। शुक्रिया। लाला और मीर उमर ये दो बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए। ऐसे में अगर इस मैच की बात करें तो हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 3:33 पर यह मैच शुरू हुआ। तो टॉस जीता था सुल्तान के कप्तान और जिन्होंने निराशी के सिवा इस साल कुछ नहीं देखा, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। रफ्तार के सौदागर सईद सागर और वो गेंदबाजी की शुरुआत आगे आकर खेला। लाला और मीर उमर की जोड़ी। लाला वही खिलाड़ी है जिन्होंने 2024 में यहाँ बहुत ही बेहतरीन खेल पेश किया था। तब से लाला काफी नमूद आ रहा है सोशल मीडिया पे कि पिछले मैच में खास कुछ नहीं कर पाए लाला, पर आज नया दिन है। एवरीडे इज नॉट संडे। हर दिन नया दिन होता है, तो एक नई शुरुआत के साथ आज एक नया आगाज करना होगा अपने इस क्रिकेट कैरियर का। वहां लाला को 4 बनाए लाला ने चौके से जाकर उन्हें अपना खाता खोला। 5 पर नाबाद 6 पहुंचा है टीम का स्कोर, जहां मुनव्वर पहला ओवर मुकम्मल। सागर ने 6 रन खर्च किया और सफलता अभी तक नहीं मिली। One done, it's 6 for none. Yes, absolutely right. Mansoor Aziz comes in. He just second to my opinion. A young lad from Baramulla is going to bowl in over number 2. He's going to share the new ball. Said Salman is going to bowl. What a name he's got, Said Salman.
Have you heard of Mansoor that said dynasty once ruled on Kashmir? Once upon a time. Well, it's 6 for none. We are going to be in over number 2. History apart. Back to the business. Over number 2 we are in. Jahangir John, I think Zishan is in the lineup. Wicket keeper. I'm talking of Sultans. Who's the wicket keeper? Zishan, thank you very much for correction. He is the wicket keeper, and I saw him earlier on. But I asked my scorer confirm it. And he confirmed it because talking of that physique, the physical appearance, I got it that it's going to be Zishan. But to confirm and to put a seal on it and stamp it, I needed help of scorer. It is Zishan Ali who's keeping sticks and stumps. And this boy is tremendous character. He's got a lot of potential. Sultans bringing this young gun in the lineup. There is a celebration going on as Umar Nabi departs. Mansoor, it's a big fish, huge wicket, because Umar Nabi is an attacking batter. He loved to attack from ball 1. He's caught here. He's silent at the moment. He's silenced and is on his way back to pavilion. Gone for not. 6 के स्कोर पे पहला विकेट सुल्तान के नाम। बारामूला का बेहतरीन टैलेंट जो है सलमान, उन्होंने सफलता हासिल करके वहां बल्लेबाज को वापस भेजा। 6 के स्कोर पे पहला झटका लगा टीम जेके वॉरियर्स की टीम को। हालांकि दोनों टीमों ने अपना पहला मैच हारा है और आज उनका ये दूसरा मैच है एक दूसरे के दरमियान, और जिसमें टॉस जीतकर पहले आज गेंदबाजी करने के बजाय कि बल्लेबाजी करने के बजाय गेंदबाजी करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने। लाला अभी भी नाबाद है जिन्होंने 4 रन बनाए। वही पहला विकेट और पहला झटका लगा टीम को, यानी कि पहली सफलता मिलती हुई यहाँ गेंदबाजों को, जिसमें सलमान दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए जिन्होंने सफलता करके इस पहले विकेट की साझेदारी को तोड़ा। लेकिन मुझे आज आंचल सिंह भी शायद कहीं इस टीम में तो नहीं है, सुल्तान की टीम के नहीं, जुड्डू है इस टीम में, और इनके पास एक अच्छी गेंदबाजी है, स्पिनर्स हैं। समीर बिल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, शुरू में तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल। सईद सागर, हालांकि वो तो साफ दिखाई दे रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा सईद सागर का, क्योंकि सफलता मिली है, एक जीत की तलाश में है, एक बार फिर दोबारा अपनी पटरी पे हालांकि आने के लिए, और उसके लिए आज मुझे लग रहा है कि एक उम्मीद और आस लेकर आए होंगे सारे खिलाड़ी कि आज हमें जीत मिलेगी। 6 विकेट के नुकसान पे लाला के साथ अब नए बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। ऐसे में गवर मल्ला अब तीसरे नंबर पर आए मुनव्वर बैटिंग करने के लिए। Interesting call and decision. Oh, he's batting without helmet. I think this isn't good call. This isn't good decision from Gabar Malla. Defensive shot comes into play. Wanted single is denied. Sultans looking energetic today. There is a lot of energy going on. It looks like they had their tails up straight away into this one the other day. They were down and out straight away against the likes of Royal Goodwill. But today, looking different side, straight away against the likes of JK Warriors. Gavarmala on strike. Onto the pad line, easy pickings. Works it round the corner and is off the mark. One more run. It is 7 for the loss of 1 as we are in over number 2. Our scorer Jahangir John, the 2 officials, the 2 umpires. Jayad Sab, and he's got Albin from Kerala. Tall, lanky, young lad. The TV umpire, Mr. Shaukat Mehdi. And this heat is melting Mehdi here. What I suspect and what I believe. Physical appearance and his physique. Facial expression confirms it. Straight to the man at short cover. There is Sameer Bell. No possibility of a run.
There is gentle breeze on that portion. We call it far end for we people. And on that portion we have a synthetic turf. Those colorful flags waving. People looking for cover and shade. It's hot and humid again. Works it away onto the onside. Good looking shot, in control. We'll have to content with 8 for 1 after 2 overs. Salman 1-0, 1 wicket, 2 runs, and Sagar none for 6. Umar Nabi, the lone man out in the set. It was over number 2, I think. It was Salman who produced that wicket, who drawn that blood, the first wicket. There is conversation going on. Baramulla checking the ball. Said Sagar top red. I think Gawar should put on helmet. Safety matters the most. And you know that life is special and it's a gift and a bestowed benediction of Allah subhanahu wa ta'ala. जिंदगी तोहफा एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती You won't जिंदगी. get it twice. There's nothing like that of punarjanam. You once gone, you won't be able to return back. So it's better दोबारा take care चांस of yourself. And you have all the safety measures there. All the equipment should use cautiously and properly. है. आपके पास ये पुराना जमाना नहीं है, वहाँ पे एक बैट और एक हेलमेट हुआ करता था, होता भी नहीं था, पर आपके पास सामान है, आप हर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो. ये सबसे बड़ा जोखिम है. इसे कहते हैं कि अपने ऊपर कातलाना हमला करना. 8 for 1 after 2 overs. They're going 4 and over. Mansoor on that portion, on the straight boundary area, there is the Jan Quebec headquarters. And on that backyard, the tall, lanky, sky-touching peak called the Suleiman Tang, or it's also known as Shankaracharya. And this part of the world is so busy, and this part of the world has its own significance, its own importance. Whenever anyone lands at Humhama, the next home is Delgate. It's 8 for 1. It's a tourist place, and we have too many places. It's flooded with tourist spots. इसको हम कश्मीर का दिल कहते हैं. Exactly, it is just like that hot of Kashmir. Heart of And we Kashmir. have some of the big places on that portion, and even we have 2 golf clubs here. And both are in this part of the one is on that portion of Delgate, that is called the Boulevard, and one right on to the left side of our stadium here. 2 runs accrued on that occasion into the double figures. JK Warriors after being put into bat. Now the responsibility is on Lala. Baramulla need to play that second fiddle and let Lala bat freely. Let him free his arms. And Lala need to understand that there is a huge responsibility on his shoulders. He need to shoulder the innings, anchor it. Something is going on. It is Samir Bell who's down on the field. He needs some attention of physio. Samir Bell is struggling at the moment. Where is physio? You need to charge up a bit and warm up and visit the spot. What's going on as Bell is down on the field. Thanks to the beloved listeners and viewers of JK Sports Time YouTube channel. Those who are new, subscribe and press the bell icon and be the part of family. In near future, I think and maybe all assignments are going to come your way live and exclusively only on YouTube. And you can also install the app which is in Play Store nowadays. If you want to know anything, everything regarding sport, you have JK Sports Time available across all the social media networking sites, even in Play Store nowadays. So install the app and be the part of other portals so that you can enjoy the flawless broadcast and the updates coming your way. It's 10 for the last one after 2.1. We are in over number 3. Lala is on 7 of 8, just shade below run a ball, and has got Baramulla, who's on to 1 of 2. He's batting with a strike rate of 50. In the meantime, Budgam boy, Sagar. Oh, look at that one. What's going on? It was just like that.
Lala, you saw that? Did you see that? He says, "Mujhe nahi dikhi." It was just like that. I didn't see that. well, that was a pacey one. And it didn't rise. But he was expecting. He loved to bat. He loved to bat in that style we call it stand and deliver. He doesn't want to bend his knees. It's 10 for 1. This is over number 3. We are in packed offside. Heavily caught and at offside. Good looking shot this time. There is a man at mid-off. Directed. Lala would have been on his way. He gets away with that one. 11 for 1. We are in over number 3. This is Kashmir Cup Season 3 match number 7 underway. JK Warriors taking on Sultan Warriors Baramulla. Toss one by Nadeem Nadi. Asked Shanawaz Malla and his team to bat on. It's 11 for 1. Steady start. Long way to go. It's a 20-over game. Crowd in good numbers. But looking for cover here and there. That's the only way to get rid of hot and humid atmosphere. This is Alson Motors Kashmir Cup Season 3. They are the title sponsors of Kashmir Cup. Sagar bowling at good pace. But look at bravery from Baramulla without helmet. But this isn't a good call from Baramulla. This isn't something we call that sensible decision, batting without helmet. But look at that. Bravado. And keeps it away onto the offside. Not for runs. He's a tall, lanky, no doubt about that. But there is sometimes that extra bounce. Ball is kicking and jumping up the surface. Sometimes it hurries. And you don't get too much time. Or you don't have too much time to anticipate or duck underneath the ball. The next one. Once again, very watchful. Guided. He's going to get one on that occasion. There is a little fumble from Azim Ratha. Azim unable to prevent that single. 12 on the board. JK Warriors put into bat by Sultan Warriors Baramulla. Both the teams looking for that first win of the tournament. They're yet to open their accounts on the pointers table. 2 points up for grabs. And it is a league-based tournament. You got to win each and every game to try and finish on top. 1 down, 12 on the board. Sun is shining brightly with a Santa gentle breeze. And that's what spectators and players require at the moment. That's what they need. One more added to the offside cordon and fold. The man who was fielding at third man is asked to come inside. He's around that third slip area. There is a backward a point and a straightish point. Lala drives. Not for runs. It's 3 gone. 1 down. 12 on the board. Khalid Butt. Khalid Nabi. Irfan Ifi. Imran. Shahid Jabbar. Tawsif. Khalid Butt is in the lineup. Eyes are going to be on Khalid Butt today. So Khalid also need to deliver. He's going to come in middle order. Right now it's up to Lala and Baramulla to stabilize. They need that stability at the moment. सुल्तान के पास वसीम कातरू नहीं है, उन्हें जीशान को खिलाया. Well, Wasim Kachru missed out on today's occasion. There is another wicketkeeper batsman in the line. Zishan Ali. Zishan in place of Wasim Kachru. I think good call to make. Let Kachru understand that we have other option. And you got to improve your skills. Why you are showing that rash character earlier on. Why you're going after the balls without knowing where the ball is. He looks in rush straight away. And you got to be patient there. When your team rely on you, you need to step up. But he's unable to do so. And is keeping Sultans under pop straight away. Even here in this tournament. That was their first game of the tournament. He thrown his wicket on the very first ball. And soon after that, it was Sultans who crumbled, who struggled to find a way. They were unable to get out of that cage. It took a lot of doing. And in the end, they lost that game with ease against the likes of Royals. It was a cakewalk for Royals. 12 for 1. We are in over number 4. Salman to continue. He continues from JNK Bank headquarter end.
This is fourth over we are in. अभी तक 12 रन बनाए, एक विकेट गवाया टीम ने, वही शॉर्ट पिच गेंद जहां गेंद को पटकाया था जमीन के साथ गेंदबाज सलमान ने, और अच्छा खासा उछाल, कंधे का इस्तेमाल और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास आई है और डॉट का सामना करना पड़ा। हालांकि धीमी शुरुआत अभी तक मिली है, जरूरत है अच्छी बैटिंग करने की और इस विकेट पर अपने आप को सेट करने की। तो लाला और गौहर मल्ला अभी तक मैदान के अंदर, दो नाबाद बल्लेबाज। पहला विकेट तेजी से गवाए टीम ने 12-1 विकेट के नुकसान पे, और ये दिन का दूसरा मुकाबला सुल्तान बनाम जेके वॉरियर्स के दरमियान। और इस बार मोहतात तरीके से वापस धकेला, रन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन भले ही धीमी शुरुआत यहां मिली है टीम को, पर शुरू में उन्हें विकेट्स बचा कर रखने होंगे। 12 के स्कोर पे पहला झटका लगा, 3.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। देखिए ये वो दो टीमें जिन्होंने अपना पहला मैच गवाया। अगर यहां से इन्होंने, हालांकि जो भी टीम मैच गवाएगी तो यकीनी तौर पर उनका हौसला जो पूरी तरह से टूट जाएगा। तो अपने आप को इस टूर्नामेंट में मजबूत करने के लिए, बरकरार रखने के लिए हर कोई मैच जीतना इम्पोर्टेंट है हर किसी टीम के लिए। तो कोशिश तो दोनों टीमों की रहेगी कि हमें इस मैच को अपने नाम करना है। तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है, बड़ी डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। इसमें सलमान का यह दूसरा ओवर 2 रन देकर सफलता हासिल की, और एक बार फिर आराम से खेला, किसी भी जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहे। गौहर मल्ला जानते हैं कि हमें शुरू में एक अच्छी साझेदारी की जरूरत। 5 गेंदें लगातार डॉट, सलमान का यह ओवर अच्छा गया, 1.5 ओवर की गेंदबाजी। और जो विकेट अभी तक यहां गवाया, जो विकेट अभी तक मिला, वो पहले गेंदबाज है सलमान, जिन्हें सफलता करके शुरुआती बल्लेबाज को चलता कहने की पहले विकेट पर कोई अच्छी साझेदारी नहीं। क्या मैडन ओवर होगा? और जी हाँ, मैडन ओवर डाला यहां सलमान ने। शॉर्ट पिट विकेट की तरफ यहां रन बनाना चाहते थे, खिलाड़ी को देखा और अपने कदमों को वापस अपने क्रीज की तरफ खींचा वहां बैट्समैन ने, जहां डॉट के साथ ये ओवर पूरी तरह से यहां मैडन डाला सलमान ने। 2 ओवर 2 रन और 1 सफलता हासिल की। और यहां पे हाथ खोलने का अवसर नहीं दे रहे, यहां पे मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने का। और वही तेज गेंदबाज जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, यहां से अगर आपने 4-5 ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की है और स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है, तो आपके पास जड्डू भी और आपके पास कुछ और भी गेंदबाज हैं, तो वो एक अच्छा फायदा ले सकते हैं इस विकेट का। और अभी तक धीमी शुरुआत, अच्छी शुरुआत तो हम नहीं कह सकते इसे। 24 गेंदों में 3-3 के औसत से खाली 12 रन बनाकर एक विकेट हासिल किया। तो विकेट के हिसाब से बैटिंग करनी होगी, जो विकेट क्या कह रहा है, और विकेट के मुताबिक ही बल्लेबाजों को यहां अपनी टीम के लिए बैटिंग करनी होगी और आगे बढ़ाना होगा इस साझेदारी को। तीसरी विकेट पर और गौहर मल्ला जिन्होंने 2 रन बनाए, आप अंदाजा लगा सकते हो 10 गेंदों का सामना किया उन्होंने। यानी कि इससे ऐसा लग रहा है कि शायद इस विकेट पर बैटिंग करना मुश्किल है। 2 ओवर पावर प्ले के अभी आने बाकी। गेंदबाजी में तो परिवर्तन अभी तक नहीं किया। शुरुआती 2 गेंदबाज दोनों तरफ से तेज गेंदबाज सईद सागर अपना नया ओवर, तीसरा ओवर लेकर, इससे पहले 2 ओवर 5-5 के औसत से रन कैसे बिल्कुल पूरी तरह से शिकंजा कसा अभी तक गेंदबाजों ने। और बल्लेबाजों को भी इस बात का इल्म है कि विकेट अच्छी नहीं है बैटिंग करने के लिए। तो यहां से हमें एक अच्छी शुरुआत चाहे, खेला जरूर डाउन द ट्रैक आकर, इस बार पूरी तरह से यहां फ्रंट फुट पर आकर हस्ताक्षर कर दिया बल्ले से। गेंद सीधे, यानी कि बॉलर्स बैक ड्रॉ, अंपायर और गेंदबाज के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर निकल दे। पहला ये बड़ा छक्का विश्वास के साथ लाला के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का। JK Warriors want to walk away unscathed. They won down already. But that's 6. This is going to boost his confidence. And Lala is capable. Lala has got that ability. He's an able customer. He can do that. But that is a beauty. Fuller one lures him into the drive. Oh, there is something going on. But Lala decided to walk away. This is the better way to keep that heat up debate away and to stay away from that rash debate. Sometimes it gets worse. And this is the beauty of Said Sagar. He loved to slash time and again. He was just trying to up the tempo. But Mansoor, one thing I reckon that I still remember that day, and I won't
try to up the tempo. It was Flintoff, then Broad was taken on to the cleaners. It was the inaugural edition of T20 Championship. It's 18 for 1. We are in over number 5. But Sagar is known for this. He lapped up the tempo. He's going to pass on Cummins. Oh, that's a quality shot again. And has that done the distance? We'll have to wait and watch. It's on the bounce into the fence. Oh, this is going to really heat up things in the middle. Sagar is going back to the top of his bowling mark. Just Bukhara 4 coming. He's going to be wounded line now. And Lala with that quality pull shot. What a connection. Sweet. It was creamy one. Like that of ice cream. As he creamed that one. A quality shot. Rock back. And a kind of a thwack. 22 for 1 over number 5 we are in. Good delivery. Good looking shot. Sagar can't believe the way Lala kept that one away onto the onside. Sagar, something is cooking inside his body at the moment. Something is going on in his mind. 1 down, 23 on the board. JK Warriors. As I earlier mentioned, they were just trying to walk away unscathed. That's the only way the two batters are looking to use that defensive tactic here. They're going defensive, but attack is the best form of defense. What we saw from Lala this over. Breaking shackles. 11 already of 4 balls. 23. It's 5th over we are in. Baramulla does well. Could be tight. Direct it. Would have been tight one. One more run. This is good cricket from Baramulla. Scamper brings Lala back on strike. As Lala is now trying to find that rhythm. He's trying to find that meaty part of the blade. He's middling. He's connecting. On to 19 of 15 balls. Well, exactly this is what is going on. Sagar 22 from 2.5. Projected score now showing improvement. It shows they finish on 99. At one stage it looked like that they're going to finish around 60. But this is just the beginning. These things are going to change. These stats are going to change. Going for that shot again. Trying to work it away onto the onside. Sagar. Little conversation or discussion. Few comments passed on. As he walks away. Oh, something is going on. Albin. Sagar. And Lala is there. Sagar smiling. And Sagar knows that Sagar is telling him that, oh, come on, boy. Stay cool. I still got 2 overs. He's got 1 over left. I still got 1 over left. Lala is now trying to convey a message and is now there is something going on. Oh, that's what we require. This is good message for one and all. He's having a word with Jayed Saab there that this is just a part and parcel of the game. Forget about this. We're brothers. This is just a cricket match underway. But the message with that warm hug is that we're brothers. We're brethren. And this is, yeah, exactly 24 for 1 after 5 overs. That is the problem. This after 5 overs, that 24 for 1. And look at this new wonderful, superb to me. The cricket's biggest spectacle, extravaganza, cricket toss underway as we watch Samir Bell top rate again. Samir Bell, for the first time, spinner into the attack. Defensive shot, drives it, finds his man in place. He wanted a single. The only job for Baramulla is to rotate strike and give strike back to Lala. And let Lala take charge, spin into the attack. Spinner for the first time, the last over of power play. What spinner is going to do in this game? Find it out. Earlier on it was spin friendly. Bat and pad close together. Playing close to the body. Waits for that one. That's a good tactic. Better is to get to the pitch of the ball. Wicketkeeper Zishan Ali is up to the stumps. Bell. He isn't going to be easy at all. There is an edge. There is an edge. It's running down to the third man. Field in pursuit. He gets to the ball. Coming back for the third. Good running between the wickets. Good running. Great presence of mind. Great awareness of the game. As the two batters converting that double into 3.
It's 27 for 1. It's a kind of triplet. 1 down, 27 on the board. We are in over number 6. The last of mandatory restrictions. Last of mandatory power play. पहला परिवर्तन गेंदबाजी में समीर बेल को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। यहाँ नीचे रहती हुई गेंद, स्कोर में 1 रन का और इजाफा, 27 से बढ़कर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान में 5.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। एक अच्छा तापमान और तेज धूप, जहां तेज धूप के दरमियान के बीच ये टीआरसी और डलगेट के मैदान से आप देख रहे हैं एल्सन मोटर्स कश्मीर कप का तीसरा एडिशन। अब यहां से रनों की भी, हालांकि वो रफ्तार जो उसे भी थोड़ा सा तेज करना होगा, क्योंकि पावर प्ले में भले ही आपने एक ही विकेट पर अभी तक रन ज्यादा नहीं बनाए यहाँ जेके वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने। विकेट पहला गवा, उसके बाद गवर मल्ला है, 7 रन बनाकर नाबाद है। और लाला ने पिछले मैच में उतना खास काम नहीं किया था, पर आज देखना होगा कि लाला किस तरह की बल्लेबाजी रहेगी, किस तरह की कारकर्दगी रहेगी लाला की। एक और ओवर के इख्तिताम पजीर हुआ, 6 पूरे और पावर प्ले का खेल जो है 36 गेंदों में 29 रन बनाए, 1 विकेट अभी तक गवाया जेके अले वाले के जेके वॉरियर्स की टीम ने। 4.83 की औसत से अभी तक रन बना रहे हैं समीर बेल 1 ओवर तीसरे गेंदबाज के रूप में, क्योंकि इससे पहले और सलमान ने अपने कोटे के 2 ओवर्स मुकम्मल किए, क्यों सईद सागर ने 3 ओवर की गेंदबाजी में अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं किया। सलमान पहले ऐसे गेंदबाज है विकेट हासिल करने वाले। समीर बेल ने 1 ओवर डाला, 4 रन खर्च किए। और गेंदबाजी में परिवर्तन, स्पिनर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कप्तान। एक बार फिर नए गेंदबाज आजिम रथर को, ये चौथा परिवर्तन दिखाया गेंदबाजी में। आजिम रथर बाई हाथ के और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनका इस्तेमाल करने के लिए गए। वो पहली मर्तबा गेंद करेंगे वहां दाएं हाथ के बैट्समैन गवर मल्ला को, हालांकि गवर मल्ला 7 रन अभी तक बनाए, 15 गेंदों का सामना किया। और लाला की बात करेंगे, हालांकि पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, पर नया दिन जो होता है हर दिन एक नई शुरुआत के साथ आना पड़ता है मैदान के अंदर। तो लाला आज मुझे लग रहा है कि एक अच्छे और मूड में और एक अच्छे टच में लाला दिखाई दे रहे हैं। लाला को एक अच्छी पारी खेलनी होगी, इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। और विकेट धीमा है, हालांकि इस विकेट की बात करें तो ज्यादा बल्लेबाजों के लिए तैयार नहीं, जितना आज गेंदबाजों के लिए तैयार साबित हुआ ये विकेट सुबह से ही। एक बार फिर स्पिनर का इस्तेमाल, और गेंदबाज अपनी फील्डिंग के मुताबिक ही गेंदबाजी फील्डिंग सजा रहे हैं, और उसी फील्डिंग के मुताबिक फिर गेंदबाजी भी करनी होगी। पहली गेंद करने की तैयारी में इस बार आने दिया इस गेंद को सईद सागर, वहां पास में नजदीक डॉट पर खेला, लेकिन काफी डॉट गेंदें अभी तक खेली है बल्लेबाजों ने। Mansur, don't you think that Gavarmala is playing a good part for Sultan Warriors here? He's trying to save Sultanas from Khalid Butt, that thunderstorm. Is it? What I suspect, what I make of it, I think that Gavarmala is just saving Sultanas from another burst. Because if Khalid comes in over number 7 or 8, it won't be easy. What's going on? Well, it isn't easy. I agree with your statement. It's hard. It isn't easy. Doing commentary time and again, believe me, it takes calories. It takes determination. It takes calories. It takes not just oil. It takes midnight oil. It takes that caliber and class. The other thing is that conviction and unrelenting and unwavering love for the game, the passion. It isn't easy. And having such kind of atmosphere around the center, it's heat. It's hot, it's humid. Well, Mansoor can understand. Those who are back home, back in their offices, at their homes, watching this one on their mobile phones. Some are using different tabs nowadays. There are tablets and there are TV screens. They're connecting it to the mobile phone and finding it out how it is going on. They will be enjoying using their AC rooms, air conditioning setup. But we're doing it here in this part of we know what's going on. It is just like that we are doing commentary under 40 degrees Celsius, which isn't easy. Well, I will just talk about that. It's better to keep Gavarmala on strike because Gavarmala is helping Sultans to great extent here.
And Lala, there will be a huge amount of pressure building on Lala on his nerves, and Lala need to break free. In that way, Lala may lose his shape. So Gavar Malla need to understand it is to rotate strike here and let Lala bat freely with ample freedom. He's lucky, and look, Salman isn't trying to take that one. He knows this lad is for us there, and he's playing a big part. Believe me, this is seriously I'm talking about it, because this won't allow the others to come in and enjoy. There will be urgency when Khalid and others will arrive. They need to go after each and every ball. You have to put runs on the board. This is T20 cricket going on. It isn't a test match or a one-day setup where you have 50 overs, where you can still make a comeback after 30 overs. But it is a T20. You don't have too much time. It is all about entertainment. Come in, enjoy, and go back. Come in. It's all about, that commercialization. It's all about enjoyment and commercialization. वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, आपको मैं कह रहा गवर मल्ला उनका साथ निभा रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए काम कर रहे हैं. He has faced 18 balls for his hot 48. 30 एक विकेट के नुकसान पे 6.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल. लाला की बात करें तो आपने सही फरमाया कि लाला का साथ निभाना होगा वहां गवर मल्ला को, जो गवर मल्ला 18 गेंदों में उन्हें 8 रन का अभी तक योगदान दिया. हालांकि विकेट के हिसाब से वो दोनों बल्लेबाज बैटिंग करें, क्योंकि आज पहला मैच भी देखा होगा इन दोनों टीमों ने कि आज क्या रहा सूरत हाल जब यहाँ गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है. तो जिसमें आज जेके हालांकि 11 शुपियन की टीम को आज जीत मिली है, वही इसके स्टार्स बडगाम की टीम को आज यहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा. पर काफ़ी अच्छा मैच रहा, काफ़ी हालांकि एंड तक वो मैच चला गया है, और जिसमें बाद में और एक कीमती विकेट गवाया शबीर लेफ्टी ने, जिसके कारण बाद में मैच गंवाना पड़ा. वही अगर बात करें कि उतर रात गई और बाद गई, वो मैच तो अब चला गया. पर यहाँ से देखना होगा दोनों टीमें वो टीमें जिन्होंने पहला मैच गंवाया है. सुल्तान की टीम को भी इस बात का इल्म है कि ये मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. वही अगर और जेके वॉरियर्स की बात करें तो उन्हें भी इस बात का इल्म है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ टीम के लिए. 30 एक विकेट के नुकसान पे जहां लाला ने खेला जरूर, गेंद दूर उस ओर खिलाड़ी तैनात है. अगर बैकवर्ड स्कलर की बात करें, वहां खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया. एक एक रन से आप इस साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रहे. जानते हैं कि इस साझेदारी को हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा और गहरा करना होगा. एक अच्छी साझेदारी के साथ साथ या स्कोर बोर्ड को या स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, इक्का दुक्का करके इस साझेदारी को मजबूत करना होगा. यहां क्लीन बोल्ड हुए और जगह बनाकर यहां लाला विकेट कीपर बल्लेबाज खेलना चाहते थे. नीची रहती हुई गेंद, विकेट मिला. हालांकि अभी इस गेंदबाज का इस्तेमाल किया. यहां गेंदबाजी में परिवर्तन, ये परिवर्तन करना टीम के लिए रंग लाया. रतर को यहां मिलने वाली पहली सफलता, जहां दूसरा झटका लगा टीम को. हालांकि समीर बेल ने यह विकेट हासिल किया, जी हां बेल ने यह विकेट हासिल किया. स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, या तो मुझे लग रहा है कि लेट काम कर रहा है और मीट, हालांकि जी हां हीटअप हो गया मोबाइल फोन, जिसकी वजह से यहां स्कोर बोर्ड जो है वो थोड़ा सा लेट अपडेट काम कर रहा है, और उस पर हम जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे. गर्मी की वजह से मुझे लग रहा है कि स्कोरर के मोबाइल फोन ने भी काम करना बंद कर दिया, और ऐसा लगा था शायद. अब समीर बेल ने सफलता हासिल करके यहां घंटी बजाई, और विकेट कीपर, हालांकि वहां विकेट कीपर आप अंदाज देखिए किस तरह से विकेट कीपर भी गेंद का पीछा कर रहे थे. शायद उसे लगा था कि गेंद बाहर जाएगी, ऐसा नहीं हुआ. पूरी तरह से नीचे रही गेंद और विकेट मिला, और यहां सफलता हासिल किया. बेल हालांकि जो अपना मेरे ख्याल से दूसरा ओवर करे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा थोड़ा सा समय लगेगा स्कोरबोर्ड को ठीक करने में. ऐसे में 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और मेरे ख्याल से गवर मल्ला मैदान छोड़कर वापस चले गए. लाला अभी मैदान के अंदर नाबाद है, और थोड़ी देर के लिए आप इंतजार कीजिए, क्योंकि स्कोरबोर्ड जल्द इंशाल्लाह एक बार फिर रिलीज होगा, उसमें बेहतरी आएगी. क्योंकि हमारा जो मोबाइल फोन है वो हीटअप हुआ है, उसके कारण स्कोर बोर्ड जो है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, और उस पर हमारे स्कोर जहांगीर जान इस वक्त काम कर रहे हैं. और यहाँ टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर है और 4.50 के औसत से अब तक टीम ने जो रन बनाए और धीमी शुरुआत मिली है. हालांकि जिस शुरुआत की जरूरत होती है, जिस साझेदारी की जरूरत होती है, जिस अंदाज में शुरुआती बल्लेबाज बल्लेबाजी करते, पर वो विकेट के हिसाब से आज वो विकेट नहीं है. यानी कि विकेट यहां गेंदबाजों के लिए अच्छी है, जिसमें समीर बेल ने अभी सफलता हासिल की. अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, और यहां पे एक और विकेट मिला, और लगातार यहां विकेट्स मिल रहे, क्लीन बोल्ड हुए. और ऐसा लगा था शायद बचने का मौका मिले था, पर अपने आप को नहीं बचा पाए. फिर से यहां और बल्लेबाज के चारों खाने इस बार बंद कर दिए वहां समीर बेल ने. समीर बेल के नाम एक और विकेट और टीम के नाम एक और विकेट, यानी कि 30 के स्कोर पे हम ये कह सकते हैं मुनव्वर तीसरा झटका लगा. 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट हासिल किए. It's going to be on a hat trick in his next over. 2 into Gavar Malla departs.
And the next one comes in. It was just like that. Mansoor, it was just like that. Tu chal mein aaya. They're just following each other. You go, I'm coming. It's just like that. Keep going. Nobody's gonna stay out here. It's going to be you go, I'm coming. Keep going. So this is what's going on at the moment. They are 30 for 3. And keeping Khalid Butt in the back may be a ploy to attack the Sultans at the back end. Well, the circumstances here demand someone like Khalid Butt to come in and stabilize, keep wickets intact, cement his position, or keep the boat afloat. Mansoor Aziz, he's got a lot of energy. He's gonna beat Munawar and Nazir when it comes to the energy. He's got next level energy, believe me. And this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Mansoor Aziz, you're lucky. It started in Ramadan. It continues till June. It's gonna carry on. You're gonna carry on this form and the energy till December. Then in, well, that matters the most. Gandhi has a lot of respect for the serve. What's going on? We were having 2 balls in this over to come, but unfortunately, our score ticker isn't working quickly. We are facing the technical snag. We're going through the technical snag. It's taking time to update. Here is the next one. Onto the offside in the gap. Fielder from extra cover comes in. Does mop up? Just a single. And there is the... Well, their tagline is serving to empower. It's 3 for 34 after 7.5. Samir Bell, 1.5, 2 for 6. Economic figures. Excellent. Tight spell. Tighten at the nose. He tightened at the screws. He's not letting anyone to break free. Samir Bell, 2 overs 2 for 7. Salman, 2 overs 1 for 2. Sagar, 3 overs none for 22. Next one, deep in crease, works it away onto the onside. There is a possibility the 2 batters crossed over, 1 more run. 3 for 36. We are in over number 9. 21 of 21. Run a ball for Lala. And he's got Tawseef. New batter. He arrived. Is underway. Is off the mark. Title sponsors of Kashmir Cup. Alson Motors. Punched. Power behind the shot. He's gonna get 4 for that. That was brought to you by Just Bukhara. Hits that one. It runs away. Welcome boundary for JK Warriors. And that was brought to you by Just Bukhara. But this is gonna help Lala to great extent. And Lala need to understand that. He's fought hard. Now, job needs to be done. Now he need to take that responsibility. He's lucky to survive. Gets away with that one. Chase for captain. He gets to the ball. But not before the 2 batters. Pinch a brace. Exactly 42 for the loss of 3. Aftab Saab isn't happy with JK Warriors at the moment. So is our combox. Well, what's going on? What's going on? Oh. May Allah bless all of us. It was a short circuit. Not just electricity is gone, but there was something else going on. It was just like that firecracker bursted on that occasion. It was a burst of fire on that portion. Or those who were there, the sparks. And there was a kind of a shock.
There was a shocking wave across that portion. Spectators, they were helpless. It was just like the ding-dong. 43 for 3. Over number 9 we are in. It looked like that. Someone burnt the cracker and it went off. The sound we heard, it is going to take time to keep things under control and under check what was going on. All of a sudden it was just like that. In no time, in a jiffy, the flames came off. 43 for 3, Tausif 205. Lala has put in all the hard work. Now the time has come to step up, rise to the occasion, and look for gaps here. You've got big spaces available on either side, and look for ones and twos to build that momentum again, as you lost 3 of the batters. But Sultans will be kicking themselves. They sent Baramulla back to hut, who was playing with a different tactic, who was looking defensive today. In the meantime, Lala is getting ready again. After 9 overs, they're 43 for 3. Over number 10, Bell brought back 2 for 7. Good looking shot, flicked. Square on the on. Is he gonna more than one? No, just a single. Umpire having a word and telling him, don't run onto that danger portion. You keep going on the track. This isn't good at all. Here comes the next one from Samir Bell. That's in the air. And that's out of here. What a connection. Brilliant shot. Fearless. And he welcomed Bell with a mighty swung away. It's going on all the way. For a maximum 50 comes up in over number 10. Top job for Shaukat Mahdi. Top job, believe me. Not just burning calories, but it's hectic job. Tough one. On cards, and we are facing an issue. And we are having some issues with the camera setup. We have multi-cam setup. One isn't available right now. The 3 others are giving us feed, but the one is unable to provide us that feed. So we're gonna wait a while. 3 for 50. There is a pause in play. May I remind you, because of that short circuit, electricity is cut short. So is the case with that camera person on that portion. We'll have to wait and watch for a while. So it's better to take time. It's gonna take some time. We need to adjust to this, and we need to overcome the electricity problem which we are facing at the moment. The one portion where cameraman is helpless because of that unavailability of electricity in this spot of the world due to that short circuit earlier on. 3 for 50. We are in over number 10. Bell is gonna continue. Is he gonna ring the bell? But that was attacking shot of the bat of Tausif with a high backlift. Waits for Bell. Once again, in the air. Is man in place? Is someone there? No, it landed in no man's space. 2 men were converging. None could make it to the ball. It's 3 for 52. Over number 10 underway. 9 up the over. They need some big overs here. And luckily, the camera is back again. We are receiving feed from everybody now. 3 for 52. And one of our camera persons saying, I can't do very much. What can I do? Hit hard, straight down the ground. That single makes it 10 off 4 balls. Bell, he's in his 3rd over, 2 for 17. JK Warriors need runs here. Now the 2 batters in the middle trying to resurrect. The partnership project is underway.
One more run. He's gonna run for the second. He's gonna go back. He's gonna come back for the second. With that brace, it's 55 for 3. This is Alson Motors Kashmir Cup Season 3. Match number 7 underway. This over first ball, single, second ball, 6. Then followed with a brace. Once again a single and then brace. What's going on? What a combination. It started from 1 to 6 and from 6 down to 2 and 1 and 2. The next one behind square on the on. There is a man. There is a field. A single to end the over number 10. Halfway mark, halfway stage. This over yielded 8, 10, 11 and 12 of it. Lala 32 of 27. 3 for 56 after 10 overs. Short pause in play. Time for drinks. And I also needed a breather. Here I'm gonna relax a bit.
आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। 10 पूरे हुए और पारी का 11वां ओवर। नए गेंदबाज 10 के बाद अब यहां जड्डू का इस्तेमाल किया। कप्तान ने बाई हाथ के गेंदबाज है, वो अच्छे गेंदबाज हैं। देखना होगा कि क्या यहां कामयाबी मिलेगी। और गेंदबाज जड्डू को, हालांकि बाई हाथ के गेंदबाजों ने आज दिन भर कमाल की गेंदबाजी की है। लाला अच्छी पारी खेले आज और 32 पर नाबाद 29 गेंदों का सामना किया। न सिर्फ एक अच्छी पारी खेलनी होगी, इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील करना होगा और जरूरत है यहां से अब स्कोर बोर्ड को तेजी के साथ चलाना होगा, तब जाकर एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती टीम। यहां नई गेंदबाज, हालांकि तौसीफ अभी अभी और डगआउट से नमूदार होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने 11 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। यहां बड़ा स्ट्रोक लिया, यह काफी दूर जाएगी गेंद और बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। लाला के बल्ले से निकलने वाला, आज लाला तो काफी मूड में दिखाई दे रहे हैं और पिछला मैच जो रहा था वो खराब रहा, पर यह मैच जो है उस मैच के भी भरपाई कर दिया लाला ने। और लाला के बल्ले से निकलने वाला बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। Bad delivery down the leg side. Lala was eyeing that bad ball and goes with that shot. Once again, half tracker. This is going to land on the roadside. Another 6. That 6 brought to you by Just Bukhara. 2 गेंदों में 2 छक्के लाला के बल्ले से निकलने वाले। अब इस तरह की बैटिंग करने की जरूरत है और थोड़ा सा तेज खेलना होगा, तब जाकर एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है टीम। यहां लाला के बल्ले से ये दूसरा छक्का बैक टू बैक। हालांकि जड्डू एक नई गेंदबाज का जो इस्तेमाल किया था टीम के कप्तान ने, उसे लगा था शायद स्पिनर्स के लिए अच्छी, विकेट मिला। यहां अब जाकर विकेट मिला, क्लीन बोल्ड हुए। एक बार फिर खड़े खड़े यानी कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। हालांकि हर बार तो बड़ा स्ट्रोक नहीं आता है और गेंदबाज ने अपना काम कर दिया और लाला को खामोश किया। 2 छक्के लगाए और यहां जावे, हालांकि जड्डू का जो ये पहला ओवर है, इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सफलता हासिल करके क्लीन बोल्ड किया। हालांकि मिड विकेट के ऊपर से यहां मारना चाहते थे, थोड़ी सी गेंद नीचे रही और तेज डाली ये गेंद। वहां जड्डू ने क्विकर का इस्तेमाल किया, बोल्ड हुए, विकेट मिला। एक और झटका लगाया टीम को। Wicket number 4 down. Lala gone on 44. He was just trying to up the tempo, deciding to take them on, hitting 2 sixes on the trot. But all of a sudden, that was little quicker and it stays little low, or too low for Lala, and that cross bat shot. And it didn't come off the bat. It goes beneath the bat, hitting the timber. So there's 68 for the loss of 4 wickets after 11 overs. That brings Khalid Butt. He comes in at number 6. People call him Mr. 360 in the valley. And there is a logic behind that point. And Khalid has proved his mettle on multiple occasions. He has scored 11,415 runs. He's got a wonderful average. Wicket-keeper batter. He's the key member of JK Warriors in the tournament. Despite busy schedule, he's part of their side. He has made it possible that I'm going to serve JK Warriors in the tournament. They're 4 down, 68 on the board. 12th over underway. Ball is back again. That landed onto the roadside. That landed onto the national highway. The next one, driven straight. Drive comes into play. There is a man at long on. He takes care of that. Just a single. It's 69 for the loss of 4 wickets. We are in over number 12. Nadeem Dar for the first time operating. Nadeem continues to bowl. And that one is gonna run away down to the boundary for 4. That was brought to you by Just Bukhara. And this is gonna hurt the bowler as it goes past. Khalid is happy to take that. And he's underway, he's off the mark with the boundary. Look at his strike rate, it's 400. That's a good shot again through the line. And that's going to land beyond the boundary. A captain is under the pump here, as Khalid Butt has decided to take him on. Just Bukhara 6.
Maximum coming 79 for 4, as they require too many big hits to pile up in excess of 150, 160. They need to attack the bowlers. The next one, there is an inside edge. Gets one on that. It's 11 of 3 balls, 79 for 4. पारी का 12वां ओवर 80 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। नदीम डार पहला ओवर लेकर आए और अभी लेकिन यहाँ खालिद भट्ट जो डगआउट से नमोदार हुए 3 गेंदों में उन्होंने और अब तक 11 रन बनाए अपनी टीम के लिए। एक अच्छे बल्लेबाज है, मुझे लग रहा है कि आज काफी और मुझे लग रहा है कि देर बाद इसे बैटिंग करने के लिए भेजा टीम के कप्तान। लेकिन कप्तान का फैसला होता है कि कहाँ पे मुझे किस बल्लेबाज को भेजना है और अभी काफी सारे ओवर्स आने बाकी है, तो एक अच्छी पारी खेलने का मौका है वही। और गेंदबाजों को मालूम है कि इस बल्लेबाज को हमें रोकना होगा, खासकर खालिद भट्ट को। अच्छी बल्लेबाजी करना जानते और एक अच्छा रिकॉर्ड है खालिद भट्ट का, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है। 12 पूरे 8 ओवर अभी भी आने बाकी, 48 गेंदे, 81 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। यानी कि धीरे धीरे आप जाकर यहाँ अब हाथ खोलने शुरू कर दिए बल्लेबाजों को। बल्लेबाजों ने पिछला ओवर भी अच्छा गया तो उसमें भी और 2 गेंदों में 2 छक्के आए और विकेट मिला था, तब लाला को क्लीन बोल्ड कर दिया था वहां जड्डू ने। नदीम डार का ये जो ओवर पहला ओवर गया इसमें 13 रन आए और आप अंदाजा लगा सको वहां पे भी पिछले ओवर ने भी काफी अच्छे रन दिए टीम को। अगर जेके वॉरियर्स की बात करें, अगर इस ओवर की बात करें, इस ओवर ने 13 रन दिए और जड्डू के उस पिछले ओवर ने 12 रन दिए और विकेट हासिल किया था। अब धीरे 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 जाकर यहाँ ये जो पहली पारी है और इख्तिताम पजीर होने वाले, पर बड़ी बात है कि न जाने अब टारगेट क्या मिलेगा यहाँ सुल्तान की टीम को दूसरी पारी में हासिल करने के लिए। दोनों टीमों ने अपना पहला पहला मैच हारा है और आज देखना होगा कि किस टीम की यहाँ जीत होगी और किसे दोबारा आज यहाँ हार का सामना करना होगा। हवा में गेंद है, हालांकि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और उस ओर सईद सागर तैनात, उनने कोई भी गलती नहीं की, एक आसान सा कैच दिया और वहां सईद सागर ने लिया, विकेट मिला। खालिद भट्ट नाबाद और हालांकि तौसीफ ने अपना विकेट गवाया। जड्डू ने यहां दूसरी सफलता हासिल की। इससे पहले एक ओवर किया था, वहां एक बड़ा विकेट सेट बल्लेबाज को आउट किया और यहां और तौसीफ का उसे विकेट मिला। 2 विकेट अभी तक उन्हें हासिल किए, 5 विकेट गवाए। पहली पारी जा रही और वही सुल्तान ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। Quality of balls, you also need to maintain that. It has a point to be. It's a good move, but to prove it's worthy, it's not going to give it balance. You need the balls of that way, hitting like that. The quality should be up to the mark. There is a fumble that leaked the second that allowed the extra run. This is a good from fielders there. One more run.
It's 2 in the end, 84 for 5. Last one of over number 13 comes up. In his second over, last ball, he's conceded 15 and kicked off 2 wickets. Jadu, that spinner from Jammu area. 84 for the loss of 5. We are in over number 30. Last ball is coming up. Jadu in his second over, last ball. On strike, Khalid Butt. Butt looking for big shot. There is a shot for stumping. And third umpire is asked to help us. It's repo to the TV umpire. It's going to be safe, it looks like, but well, the TV umpire will show us the right image, the right angle. He's so quick. Khalid Butt, he's so quick that his foot comes quickly back to the safety of crease. And we're facing an issue. We'll have to wait and watch. We're going to take a look again. It's 84 on the board as Khalid Butt survives. There was a shot for stumping. Shahid Jabbar will take strike. Other day, Shahid Jabbar helped his side with that cameo to finish on a good score. In the end, it was JK Warriors. They fell short and lost the game. Khalid coming up with that half century. Azim again. Shahid Jabbar is clean bowled. First ball strike for Azim Rathar. Wicket number 6 down. What a strike. Big hitter of cricket ball is sent packing. And that follow wicket brought to you by Jester Bukhara. It's 84 for 6. That brings new batter in at number 8. Shahid Jabbar is going back to hut. He's going back to pavilion. Playing all around that. Doesn't middle, doesn't connect. That brings Danish Khande. Is it Danish Khande? I think it's Danish Khande. His face looks like. Well, we'll have to wait and watch. Our scorer will confirm. Yes, he shakes his head. Says, of course, I'm Ishfaq. He has got that resemblance. It looked like he has scored 1476, best of 90 plus. 84 for 6. Over number 14 we are in. Ishfaq and Khalid Butt is the fresh pair in the middle. $84 for 6. 14th over underway. Ishfaq Nabi will be facing the likes of Azim Rathar. Rathar is on top straight away as he picked up a wicket on a very first ball. This will boost his confidence. His tail is literally up. What he's going to produce? Defensive shot. Not 4 runs. Azim, he's looked good today. Straight away. Removed one of the batters. Khalid Butt stranded on the other end. JK Warriors restless. Oh, this could be tight. We'll have to wait. He's walking. Not looking for the Skellig umpire. He decided to walk away. Azim Rathar trapped him. Lured him into the big shot. He is stumped. Take a look again. It's all gone for batter there. Look how he tried to be back to the safety of crease. It looks like that he was trying to use that hockey stick to defend that. It's a defensive skill using in hockey game. The way he brought his bat down and back to the crease, it reminds me of that move. Look, the way he brought the bat back. It is well short of his ground, well short of his crease. Wicket number 7 down. 84 for 7.
7 down. Wicket down here for JK Warriors. One more bites the dust. One more down. Another setback. Wickets coming. Wickets falling. Is that Timberan in at number 9? A very smile on his face. Sultans would love to keep Khalid, but on the other end. And there is a message from Khalid to newcomer straight away. Jayed Saab is having a word with Khalid, but Khalid isn't happy at all. But there is a message. The rules are going to be in place here. And no one is allowed to make mess of that. All are bound to respect the guidelines, the regulations. And this will teach them a lesson for a long way. And this will help them to be at their best wherever they are in their future. And we pray that they excel in their future endeavors. This league is going to impart those things among the players in Valley. A single to end the successful over from Azim. Double strike in an over. 86 for 7 after 14 overs. पूरी ओवर्स नहीं खेले तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा नुकसान होगा जेके वॉरियर्स की टीम को। खालिद भट्ट मैदान के अंदर नाबाद और इमरान जिन्होंने 1 रन का योगदान दिया, 3 गेंदों का अभी तक सामना किया। तो आने वाले हालांकि 6 ओवर में कुछ रन और अगर यहाँ बटोरे अपनी टीम के लिए तो टीम 121 तक जा सकती है। जिस तरह से स्कोर बोर्ड चला रहे 6-6 की औसत से अभी तक रन बनाए 6.07 की औसत से। दिन का दूसरा मुकाबला जडू एक बार फिर अपना तीसरा ओवर लेकर आए। 15 रन दिए और 2 सफलता अभी तक हासिल किए। 3-4 कदमों का छोटे नाफ के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद इस बार गेंद को गाइड किया, हालांकि गेंद के और घूमने का इंतजार किया वहां बैट्समैन इमरान ने, जहां इमरान के खाते में 2 रन और खालिद भट्ट और इमरान को अब यहां से अच्छी पारी खेलनी होगी, पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश भी करनी होगी, तब एक अच्छा टारगेट मिलेगा क्योंकि सुल्तान के पास आज और अच्छी बैटिंग है। हालांकि वसीम कासरो आज टीम में नहीं है। जीशान अच्छे बल्लेबाज है जिन्होंने हाल ही में एक शतकीय पारी भी खेली है, अच्छे टच में है जीशान जो काफ़ी करीब इस वक्त विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे। एल्सन मोटर्स कश्मीर कप का आप ये और 7वां मैच मेरे ख्याल से देख रहे हैं, तो इसमें आज बड़ी बात है कि दर्शकों की एक अच्छी तादाद भी है। तेज़ धूप है और काफ़ी तेज़ तापमान, जहाँ हल्की हल्की सी हवाएं इस वक्त मैदान के अंदर चल रही है। इस मैच का ये 15वां ओवर है इस पारी का। जडू को लगातार गेंदबाजी के लिए इस्तेमाल किया कप्तान ने। अच्छी गेंदबाजी रही क्योंकि विकेट 2 हासिल किए और रन भी कम अभी तक खर्च किए। 16 गेंदें, जहां खालिद भट्ट ने अभी तक 13 गेंदों में लेकिन 6 रन बनाए, कोई छक्का नहीं, हालांकि कोई चौका नहीं, एक छक्का लगाया। 216.67 की औसत से, हालांकि स्ट्राइक रन रेट से वो बल्लेबाजी करें। और इमरान की मैं अगर बात करूं जिन्होंने और अभी तक 3 गेंदों का सामना किया, 8 पर नाबाद, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। और वही जडू ने 2.5 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। आजिम रहतर ने 3 ओवर में और 12 रन दिए, 2 विकेट हासिल किया। अच्छी गेंदबाजी रही अगर बात आजिम रहतर की करें, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ हालांकि कोई मेडल अभी तक नहीं डाला, बट अच्छी गेंदबाजी करके एक अच्छा स्पॉट आज मिला गेंदबाजों को। और सुबह से ही आज स्पिनर्स ने काफ़ी सारे विकेट्स हासिल किए। अगर हम दिन भर की बात करें, आप जड्डू ने 2 विकेट्स हासिल किए आज। यहाँ इससे पहले जावेद जडू जब गेंदबाजी करे तो उन्होंने भी 4 विकेट्स हासिल किए। वहाँ सफदर ने भी एक अच्छी गेंदबाजी की पहले मैच में, उन्होंने भी विकेट्स हासिल किए। यानी कि कुल मिलाकर आज स्पिनर्स के लिए एक अच्छा दिन था और जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके खूब विकेट्स हासिल किए। 15 पूरे 5 ओवर आने बाकी, 87 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जिसमें खालिद भट्ट का विकेट भी रहना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। खालिद भट्ट एक अच्छे बल्लेबाज है
और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और जानते हैं कि इस विकेट पर मुझे किस तरह से आप जाकर इन गेंदबाजों का सामना करना, जो गेंदबाज लगातार यहाँ हावी दिखाई दे रहे बल्लेबाजों के ऊपर। और पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को दूर भेजा, अपने शरीर से रन पूरा करने का मौका मिला। 1 रन और टीम के खाते में। आजिम रेथर का ये आखिरी ओवर होगा। 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किया उन्होंने। टीम के कप्तान नदीम डार स्लिप कॉर्डन में फुट स्लिप पे खिलाड़ी तैनात है। थर्ड मैन को अब अंदर बुलाया गया, वहां जड्डू तैनात है, पॉइंट बिल्कुल वहां बल्लेबाज के नजदीक। शहीद सागर बहुत ही बेहतरीन गेंद, तेज गेंद फेंकिया और क्विकर का इस्तेमाल किया। पढ़ना और पहचानना बड़ा मुश्किल हुआ और वहां इस गेंद को बैट्समैन इमरान, और जहां गेंद सीधे विकेट कीपर के पास है, डॉट के साथ कोशिश तो यही रहेगी कि हमें इस पारी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा और कम अज कम स्कोर पे रोकना होगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, इस बार जड़ में फेंका इस गेंद को और जैसे तैसे करके स्टम्प्स की तरफ जाने से रोका और गेंद को अपने शरीर से दूर धकेला। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। अच्छा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं इस मैच को। अच्छा मुकाबला पर हर किसी की अब नजर इस मैच पे है। सबसे बड़ी बात है कि सुल्तान ने इस टूर्नामेंट में 1 मैच खेला और वो गवाया, और तब रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के साथ उनका वो पहला मैच था। वो इस टूर्नामेंट का तब शायद दूसरा मैच था वो, और दिन का वो दूसरे मैच में उन्हें वो और सुल्तान ने वो रॉयल गुडविल के साथ मैच, और दिन का दूसरा मैच था इस टूर्नामेंट का। बिल्कुल मुझे सही तरीके से ये बात याद है। तो हर दिन नया दिन होता है, आज एक नई उम्मीद और आस के साथ। और यहां देखना होगा और थर्ड अंपायर की तरफ इस डिसीजन को वहां स्क्वायर लेग अंपायर ने रेफर किया है। क्या ये थ्रो डायरेक्ट लगा या विकेट कीपर ने अपना काम अंजाम दिया? शहीद सागर जिन्होंने सवाल पूछा था अंपायर से, एक बार फिर आप देख सकते हैं विकेट कीपर ने गैदर किया और इसे तो काफी बार थे, उससे पहले ही जीशान अली ने काम तमाम कर दिया था बल्लेबाज का। काफी तेज थ्रो आया। सबसे पहले देखना होगा कि क्या गेंद ठीक तरह से हालांकि लगी है स्टम्प्स के साथ या नहीं। आप दोबारा चेक कर सकते हो, बार बार इसे दिखा रहे हैं वहां पे हमारे टीवी अंपायर। और इसमें देखना होगा कि फैसला क्या आएगा अंपायर, टीवी अंपायर की तरफ से। और बिल्कुल इसे आउट करार दिया गया है। सही फैसला यह अंपायर की तरफ से, काफी करीबी मामला था ये, और 2-3 बार चेक करना पड़ा और उसके बाद टीवी अंपायर की तरफ से फैसला आया। यहां रनआउट के रूप में वापस जाना होगा बल्लेबाज को। 8वां झटका लगा। खालिद भट्ट मैदान के अंदर नाबाद है, पर उनके साथी बल्लेबाज ने यानी कि तेज दौड़ लगाने की कोशिश की और अपना ये रन पूरा करने की कोशिश, पर उससे पहले ही वहां खिलाड़ी ने तेज थ्रो किया और पलक झपकते जीशान अली ने अपना काम अंजाम दिया और विकेट मिला। 8वां झटका लगा यहां टीम को। मुझे नहीं लग रहा है कि इस हिसाब से पूरे ओवर्स खेलने का मौका मिलेगा। खालिद भट्ट एक वाहिद ऐसे और बैट्समैन है जो एक बल्लेबाज की हैसियत से इस टीम में, और वो अब मुझे लग रहा है कि नाबाद खालिद भट्ट 14 रन बनाकर नाबाद 7 गेंदों का सामना किया। इमरान शायद मेरे ख्याल से वापस चले गए, जिन्होंने 12 रन अभी तक 12 गेंदों का सामना किया था, और इमरान हालांकि 13 गेंदों का सामना किया था। 3 ही रन और बना पाए इमरान और खालिद। जी हाँ सॉरी, यहाँ पे अब खालिद भट्ट मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं, क्योंकि कभी कभार ये देखिए और आपके स्क्रीन के सामने इत्तेफाक की बात है 8-8-8-1-5-0-5 और ये इस वक्त आंकड़ा दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पे। और जहां 88 रन 8 विकेट के नुकसान पे 15.5 ओवर की गेंदबाजी, बड़ा विकेट मिला। ये बड़ा नुकसान हुआ यहां, क्योंकि खालिद भट्ट की जरूरत थी यहां टीम को, और एक जोखिम लिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा वहां खालिद भट्ट को। खालिद भट्ट का विकेट मिला, डायरेक्ट थ्रो आया, उसमें चांसेस कम होते हैं बचने के, और वही हुआ क्योंकि उससे पहले जीशान अली ने और अपना काम अंजाम कर दिया। इमरान डागआउट से जो नए बल्लेबाज इससे पहले नमूदार थे, उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस विकेट पर बैटिंग करना कितना मुश्किल है। ये हम नहीं कह रहे, ये बल्लेबाज कह रहे जो काफी गेंदों का सामना करके उन्होंने अभी तक ज्यादा रन नहीं बनाए। और नए बैट्समैन हालांकि खालिद भट्ट की जगह बैटिंग करने के लिए आए। 8 down, 88 on the board. Last ball of over number 16. Azim Rathar, 2 wickets of his 3.5. Last ball of over number 16. 16 done. JK Warriors put into bat. 8 down, 88 on the board. Samir Bell, 2 wickets. Azim 2. It's 2 apiece. Samir, Azim and Jadu. All the 3 picking 2 wickets. It's 2 each. 2 apiece.
But three of the bowlers from Pack have done really well. All three picking two wickets. And others chipped in with 1-1. And one of them, I think it was one of the... And the other two picking up 1-1. Now it's down to the under 19 boy to operate. Left arm. No, it is Jadu. I thought it's under 19 boy. It is Jadu to continue. He's got 1 over left. He decided against a run in the end. Imran, it was an easy one. He has used it 14 balls for his 3 runs, 3.1 nomad and 2 for 17. Number of dots 14. Number of runs he conceded is 17. Economic. Good over. Tight over. Guided. And there is a fielder. But can't prevent that brace. And with that brace, score propelled to 90 for the loss of 8 over number 17, wherein current rate is 5.44 and over. In the meantime, there is a change in the field. Azim asked to be available on onside. He's going to be on the boundary line. Is it Basit Akbar or someone else? Who's this Jangir? Who's that? Farhad Ghani, the young lad. He was bought by Sultans in auctions. That's going to be a good shot. Good looking shot. Straight down the ground. A single is all he's going to get. No, he's coming back for the second. Good running between the wickets. Is it a single or a... Yeah, it is single, sorry. Now Imran on strike. Early into the shot. Ball arrived little late. Little bit late. Had that connected would have been 6. Because we have a shorter dimension on this portion. That one again in the zone. What's going on? He's unable to pick the ball. He's unable to read that one. Lala read that twice. And third time it was a quicker one. And that was a low one. That cost him his wicket. And this lad is struggling here. Now trying to use that reverse sweep. There is Farhad Ghani to take care. Overdone. 17 gone. 8 down. 91 on the board. 17 पूरे हो चुके हैं. खालिद नबी और इमरान की जोड़ी इस पहली पारी में, और जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, उससे गेंदबाजों ने सही साबित किया. जो सोचा था वही हुआ और जिसका डर रहा था वही हुआ. आज यहाँ टीम जेके वॉरियर्स के साथ खालिद नबी अभी दोनों बल्लेबाज हैं, नए बैट्समैन है खालिद नबी, और उनके ऊपर आप प्रेशर बना सकते हैं क्योंकि 8 चले गए 2 मैदान के अंदर और 1 का अभी आना बाकी है. इसके बाद अंतिम और आखिरी बल्लेबाज, नई गेंदबाज, खेला खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं. जुनेद लेफ्टी, अब पहली मर्तबा आप अंदाजा लगा सके इनके पास एक अच्छी गेंदबाजी थी और आज मुझे लग रहा है कि 2-3 हालांकि स्पिनर्स को खिलाया टीम के साथ. जुनेद लेफ्टी जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, यहां से देखना होगा क्या विकेट मिला कि नहीं मिला. और जी हाँ, विकेट मिला. एक और झटका लगा यहाँ टीम को, 9वां झटका. और जुनेद लेफ्टी अभी गेंदबाजी करने के लिए, और आते ही आते उन्हें सफलता हासिल करके वहां बल्लेबाज को चलता है कि, और पहली मर्तबा आज मुझे लग रहा है कि इस टीम में जुनेद लेफ्टी मुझे नजर आ रहे हैं. खासकर इस टूर्नामेंट की मैं अगर बात करूं, पिछला मैच नहीं खेला था इसने सुल्तान के साथ, और आज वसीम काचरू भी टीम लाइनअप में नहीं है और उसकी जगह जीशान लेफ्टी को खिलाया गया. और विकेट कीपर के पास गेंद आई है जहां बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर सीधी विकेट कीपर की तरफ आई है. Batter left, and then umpire was provoked to raise the finger, but there is nothing as far as the umpire is concerned. He has got no problem with that. It wasn't up to the umpire, but later on he decided to raise his finger because batter decided himself to walk away. There was no problem with the umpire there, as he was provoked to raise the finger because batter decided to walk away without waiting for the umpire's call to decision. To make a call, he decided to walk away. Junaid again. Quicker one, right on money, tighter one. It is a dot delivery, 91 for 9. 18th over underway.
Junaid again. Wicketkeeper up to the stumps. Aerial. Shout to sub-catch it. And as far as our score is concerned, he's got those eyes on that portion. He says, not possible, impossible. A single is all he's going to get. 92 for 9. Sultans are trying to keep them below 100. But Warriors, they have an opportunity to cross that mark of 100. And that one, it lands in no man's space. Again on the bounce, Asim does well. Cuts it off. 9 for 93. 13 balls remaining. The last pair is in. The number of runs these two will put on is going to be bonus. And it's onus on the two batters to chip in with a little stand so that will help them to finish at a 120, 130. 18 gone, 9 for 93. This is Alson Motors Kashmir Cup, Season 3, match number 7 underway. This tournament, it's going to host 29 games. It's going to hold 29 games. And 7th one is underway. 22 matches are going to come after this one. ये 7वां मैच है इस टूर्नामेंट का, जहां मीर उमर नबी ने हालांकि 1 रन का योगदान दिया. Saturday, it's a half tournament will be done till Saturday. This coming Saturday. तो आधा सफर तय हो जाएगा. 15 matches will conclude till Saturday. अब 2 ओवर की गेंदबाजी आनी बाकी है. 7 today, tomorrow 2, 9. जिसमें मीर उमर ने 1 रन का योगदान दिया. लाला ने 44 रनों की एक अच्छी पारी खेली. 33 गेंदों का सामना किया और जिसमें 3 चौके और 3 छक्के आए मेरे ख्याल से लाला के बल्ले से. और गवरमला ने 10 रनों का योगदान दिया. 21 गेंदों का सामना किया. मोहसिन ने खाली 1 रन बनाकर हालांकि वो 0 की स्कोर पे और वापस चले गए. 1 गेंद का सामना किया और तौसीफ ने 13 रन बनाए और खालिद भट्ट ने 14 रन बनाए. सजाद शाहिद जब्बार ने 1 रन का योगदान दिया और इशफाक नबी 0 के स्कोर पे. इमरान ने 6 रन बनाए और खालिद नबी और उसके साथ इरफान की जोड़ी मैदान के अंदर नाबाद हुआ. अगर गेंदबाजों की बात करेंगे, सईद सागर ने 3 ओवर में 22 रन दिए और कोई सफलता नहीं, कोई मेडन नहीं. सलमान ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट, हालांकि 1 मेडन 2 विकेट हासिल किए. हालांकि 1 विकेट हालांकि कुल मिलाकर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया. और अगर बात सलमान की करेंगे, क्योंकि सलमान ने 2 ओवर की गेंदबाजी में और 1 मेडन 2 रन खर्च करके एक सफलता भी हासिल की. समीर बिल ने 3 ओवर 20 रन और 2 विकेट हासिल किए. आजम रतन ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और जड्डू ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए. नदीम डार 1 ओवर 13 रन, कोई मेडन नहीं, कोई सफलता नहीं. वही जुनेद लेफ्टी ने 1 ओवर में और 2 रन खर्च के एक सफलता हासिल किया. आसिम बशीर, और उन्होंने भी शायद, हालांकि आसिम बशीर मेरे ख्याल से उन्होंने और कुछ ओवर की गेंदबाजी किया नहीं की.
Asim is underway. Asim is off the mark. Sultan's off the mark with a single. 1 for none in over number 1. दूसरी पारी की पहली गेंद पर यह रन पूरा करके अपना खाता खोला आसिम बशीर ने और दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज। और पारी की शुरुआत करने के लिए दो अच्छे और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और जीशान इन फॉर्म में अच्छे बल्लेबाज है और हाल ही में उन्होंने एक शतकीय पारी खेली है, उसका फायदा जरूर मिलेगा बैट्समैन जीशान अली को। हालांकि एक छोटा लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए, अगर बात यहां 20 ओवर 120 गेंद में 95 रन बनाने ये मैच जीतने के लिए 18.3 ओवर की गेंदबाजी में। और जेके वॉरियर्स की पूरी टीम आज मैदान छोड़कर वापस, जो आखिरी विकेट था वो आसिम बशीर के नाम रहा, उन्होंने आखिरी बल्लेबाज को यहां चलता किया था। पहली मर्तबा सामना करना होगा और तौसीफ का जो गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए रोड एंड से एक बार फिर इस ओवर में दूसरी मर्तबा पहली गेंद बड़े इत्मीनान के साथ कलाइयों के सारे और गेंद को मिड विकेट की तरफ मोड़ा। उस ओर शायद जब्बार था ना, तो उन्हें गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। 2 for none after 2 balls. They require at the rate of 4.73. Asim Bashir on strike, 1 of 1. Zishan Ali 1 of 1. Here is ball number 3 coming up. Tausif to operate with a slip in place. As we watch Tausif again. Good delivery. Asim dabs it to point. There is Shahidul Jabbar. No run taken. No run there. It's a dot delivery. 2 for none. But talking about a combox today, Mansoor, it looks like that we're somewhere in a hot place. It looks like that coal mine. It's 2 for none after 3 balls. Here is the next one from Tausif to Asim Bashir. Where is this one going to go? Asim shaping for the big shot, but in the end, with that beautiful high elbow 90 degree, find us long on in place will just be 1. He's looked good, Asim, at times. But over the past couple of days, Asim was seen struggling with the form. But today, it's the high day to produce something special. And this is the way to find your form. Yeah, I know that you were struggling. Now, it's the high time to find your form against likes of JK Warriors. They don't have too much on the board. पहला ओवर जहां इस ओवर की और 5वीं की चौथी गेंद पर 2 रन आए। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, भले एक छोटा लक्ष्य मिला पर विकेट के हिसाब से बैटिंग कर रही होगी दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद थी, वापस देखेला स्टम्प्स के लाइन में आती हुई गेंद आसिम बशीर के लिए। बड़े आराम के साथ खेला क्योंकि जरूरत है यहां एक अच्छी साझेदारी की। और कप्तान जानते हैं कि किस तरह से मुझे बैटिंग करनी है। एक छोटा लक्ष्य मिला रहा है कि मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि मैच जीतने का मौका आज मिला सुल्तान की टीम को, और उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलना होगा जिस दबाव से यहां जूझ रही है, हालांकि जिस दबाव से गुजर रही है टीम सुल्तान। 1 रन और टीम के खाते में। अंतिम गेंद पर यहां आसिम बशीर ने रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा। यह 95 रनों का एक छोटा लक्ष्य मिला क्योंकि 18.3 ओवर की गेंदबाजी में और पूरी की पूरी टीम मैदान छोड़कर वापस चली गई, जिनने एक छोटा लक्ष्य और एक छोटा हदफ दिया यहां टीम सुल्तान को। और पहला ओवर मुकम्मल जहां जीशान अली ने भी खाता खोला, आसिम बशीर ने भी 4 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, 4.74 के औसत से रन बनाए। पहला ओवर जो और तौसीफ का यानी कि तेज गेंदबाज से शुरुआत करवाई टीम के कप्तान ने, इसमें 5 रन आए, अभी तक कोई विकेट नहीं गवा, यानी कि पहले विकेट की तलाश में। जानते हैं कि अगर मैच जीतना है तो शुरू में हमें इन 2 बल्लेबाजों को रोकना होगा। Absolutely right. They need to put brakes on the scoring rate straight away. These 2 batters, if they get going, it won't take too much time to finish the game. You're right. They need to control, but that one, it flies over the ball, set straight into the side screen area for 4. This is Asim Bashir for you. Star of Tangmurg hits that one away. Just a book or a 4 coming. 9 for none. Those who are new on YouTube, subscribe to our channel and press the bell icon. And it's live on Delegate Sports Club Facebook page also. But in the meantime, लगा यहां दूसरी पारी का आसिम बशीर के बल्ले से। और जहां आप देखे एक बार अच्छी वापसी, बहुत ही बेहतरीन गेंद की। बल्लेबाज के रिडार से गेंद को दूर रखना होगा। इससे पहले चौका लगा था पर अंतिम बल्ले के दूसरी गेंद पर बीट कर दिया वहां और बल्लेबाज को। आसिम बशीर जो पहला चौका आया दूसरी पारी का, हालांकि दूसरी पारी का पहला चौका निकलने वाला आसिम बशीर के बल्ले से एक छोटे लक्ष्य का पीछा करे, पर इस चीज को उन्हें जहन में रखना होगा कि विकेट आज बल्लेबाजों के लिए उतना मदद नहीं इस विकेट में जितना आज गेंदबाजों ने यह काम कर दिया। और बहुत से ऐसे गेंदबाजों ने 3 से ज्यादा विकेट किया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, फ्लिक कर दिया गेंद को वहां आसिम बशीर ने और गेंद सीधे यहां बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। poor Mansoor, my throat is sore today, believe me, and that's why I was unable to throw it out at the right time. But that's a quality flick shot
down to the final fence for 4. Just Bukara 4 coming. Crowd in good numbers. Thank you very much. Oh, that's why you are the interim chairman. देखिए और अच्छी बल्लेबाजी करे क्योंकि जानते हैं कि अगर हमने यहाँ अपने ऊपर दबाव लिया उस दबाव से फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा. इस बार बड़ा स्ट्रोक है, काफी दूर जाएगी गेंद यहाँ कवर के ऊपर से. Can I come in? That is fair and lovely. It's a creamy one of extra cover. That is Asim Bashir for you. Classy, excellent, adorable. What a shot. Glorious and gorgeous. Wow! Look at that one again, Mansoor. What a shot. It is humongous. It's country mile. But the class personified, poetry in motion. And poetic. What a connection. Lovely timing, fair and lovely. It's 19 for none. Mansoor, that shot, that was so elegant. बहुत ही खूबसूरत. So nice. Looking like a wow. इसमें कोई शक नहीं है. दिल करता है बार बार देखो इस स्ट्रोक 1000 बार देखो. और जो स्ट्रोक यहाँ खेला आसिम बशीर ने, ये देखने की चीजें बार बार देखो. बिल्कुल जिस तरह से स्ट्रोक खेला वहां पे बैट्समैन ने, ऐसा लग रहा है कि हालांकि दिल कहता है कि एक बार फिर देखो इस स्ट्रोक को. हालांकि यहाँ पे अपने भी कानून होते हैं. और आसिम बशीर ने 18 रन बनाए अभी तक 9 गेंदों का सामना किया. इस ओवर में एक चौका और एक छक्का लगा, यानी कि यहाँ 2 चौके अब तक इस ओवर से आए और एक छक्का भी लगा. 4 गेंदों में अगर बात की जाए तो 14 रन अभी तक खर्च किए. खालिद नबी जो दूसरे छोर से नई गेंद के साथ जिनका इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, पर काफी महंगे और खर्चीले, यानी कि जानते हैं कि दबाव बनाना होगा गेंद. Yeah, exactly. They need to put pressure on the batters here. Remove the 2 batters up front and make it a good contest. But look at that one again. Slice at that one. It's like hot knife through butter again. It was aerial. Doesn't bother to keep that one down. And Asim on to 22 of just 10 balls. Oh yes, he's on to 22. This over 4-4, 6-4. That means 18 of 5 balls from this over, 23 for none. Oh, this is gonna hurt their side. This is gonna hurt their side. 5 wides. Gifted. What's going on with Khalid Nabi today? Come on, boy. He bowled a wide delivery. 5 wides. It's 28 for none. Sultan is chasing 95. A paltry total. They're 67 behind. Why I was talking about that Asim, he's got an opportunity to find that form today. Look, they're just at 95. But these 2 batters, if they go on to crack this will definitely help him to gain that confidence. But the other thing is, oh, look at that one again. That's gone over backward a point. Glorious. And you call it ding dong. I call it hammer and tonk. What a connection. Over backward a point. Lovely timing. Superb. That is a proper shot selection. Cricketing shot from cricketing book. Wow, wow, wow. Take a look from cricketing book as it goes over backward a point. He's running. It's 34 for none. On to 28 of 11 balls. Asim Bashir. Mansoor, you got to praise that shot again. This shot, it looked like of next level, of huge caliber. A man with that potential goes over backward a point. It reminds me of great scare cuts across the international cricket. I love to throw it out that it was class personified and pristine beauty. Unbelievable. Over backward a point. Please come in. बिल्कुल अच्छे स्ट्रोक अभी तक खेले वहां आसिम बशीर ने. और जीशान अली भी अब किसी से कम नहीं है और उन्होंने भी अब हाथ खोलने शुरू कर दिए और उनके बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका. तो इस तरह से ये जो ओवर है काफी यादगार ओवर यहाँ गेंदबाज के लिए काफी बड़ा और लंबा ओवर गया. और इससे पहले की मैं अगर बात करूं तो यहाँ तौसीफ के ऊपर नए ओवर, लेकिन नए ओवर की पहली गेंद पर यहाँ चौका लगाया जीशान ने. किस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया और सही तरीके से गेंद के पीछ तक पहुंचकर उन्होंने, और ये काफी तेज ठोका, लेकिन बैट स्पीड भी काफी तेज थी वहां जीशान अली की. और अली ने और यहाँ चौका जड़ दिया और जहां इस बार आगे आकर गेंद को खेला. हवा में गेंद है पर कोई खतरा नहीं. 1 रन मिलेगा इन्हें दोनों बल्लेबाज. और क्या दूसरे रन के लिए और आना लेके बना, दूसरा रन बनाना चाहते थे जीशान अली. जैसे देखा कि वहां गेंद खिलाड़ी के हाथ में और आसिम बशीर ने मना किया, वापस भेजा क्योंकि आपको जरूरत नहीं है और जोखिम लेने की. आप सभी को मालूम है कि
कोई छोटा या कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला हासिल करने के लिए, और इक्का दुक्का करके भी इस लक्ष्य को हासिल कर से इस मैच को जीत सकती है सुल्तान की टीम। पर यहां गलती करने की आज गुंजाइश भी नहीं है, मौका भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले मैच गवाया। वही अगर जेके वॉरियर्स की बात करें, उन्होंने भी पहला मैच गवाया, इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद, या बेहतरीन कैच, काफी बेहतरीन कैच, लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, कलाइयों के सारे एक बार फिर यहां शॉर्ट फाइन लेग पर जो खिलाड़ी तैनात उसे बीट करना चाहते थे, पर अच्छी यहां डाइव लगाकर उन्हें यह कैच लपक लिया। आसिम बशीर ने अपना विकेट गवाया, 28 रन बनाए और तौसीफ ने जाकर उसे खामोश कर दिया। एक ऐसी गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के आसपास अलग अलग स्पॉट पर गेंदबाजी और करने की जो लगातार कोशिश कर रहे थे वहां पर गेंदबाज, क्योंकि उसे मालूम था कि आसिम बशीर को हमें रोकना होगा। एक बार धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद और वहां खिलाड़ी को तैनात किया था, और गेंदबाज ने, क्योंकि गेंदबाज को अपनी फील्डिंग के मुताबिक ही गेंदबाजी करनी होती है, अपनी फील्डिंग गेंदबाजी के मुताबिक फील्डिंग सजानी होती है, और अच्छा कैच लिया, पहला झटका लगा 39 के स्कोर पर। यहां टीम सुल्तान को और आसिम बशीर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। हालांकि जो स्कोर है उसके हिसाब से, और अच्छी साझेदारी पहले विकेट पर 39 रनों की एक विकेट गवा, 2.3 ओवर की गेंदबाजी के तौसीफ का जो पिछला ओवर गया था वो अच्छा गया। इस ओवर की बात करेंगे, 2 गेंदों में 5 रन खर्च किए और उसके बाद एक गलत स्ट्रोक खेलने पर मजबूर कर दी। एक ऐसी गेंद है लेकिन लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, अच्छा खासा उछाल था पर रफ्तार उतना नहीं था हालांकि जितनी उम्मीद की थी वासिम बशीर ने। और कलाइयों के सारे जिस तरह से एक फ्लिक स्ट्रोक खेला था पिछले पांव पे, वो चौका जड़ दिया था, और उसी तरह एक बार फिर यहां उस गेंद को बाहर भेजना चाहते थे, पर वहां 30 गज दायरे पे उन्होंने अपना विकेट गवाया। कैच, यानी कि वहां एक बेहतरीन कैच लिया खिलाड़ी ने। फरद गनी डगआउट से नए बैट्समैन अब तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। 39 for 1, Asim Bashir. He was in hurry today. Excellent catch, nicely held. That's what we were talking about, myself and my colleague. I and my colleague, we were talking about that they need to get rid of Asim Bashir because he's going to attack them, and Azan is going on.
That was a full toss from Baramulla. Easy pickings for Farad Ghani. But good thing about Kashmir Cup Season 3 auction-based league that these young lads are coming forward. They were bought by different clubs and Sultan has bought many of them and two of them in the middle. And look at these two lads, the way they're batting. And Farad Ghani isn't happy. Would have been a great leg glance at the flick shot. But talking of this tournament, that blinder against Asim Bashir, that was Yasir. Mohsin, that was absolute blinder. And this will definitely let them improve. And with the passage of time, they will try to enhance and excel to their level best. And they will try to enhance themselves with the new tactics and the futuristic skills and the characters that they are coming into action nowadays. And people are learning from different coaches. And this will definitely help these lads to come forward and look forward seriously to this game of cricket where they can excel and they can earn the bread and not just they're going to represent state, country, but the other thing is that they are going to be the ambassadors of peace, tranquility. And the message is going to be say bye-bye to racial discrimination, say yes to humanity, and cricket is the unifier. These things are going to be the plus point that they're going to walk away from the game of glorious uncertainties. The tournament, its aim is to say bye-bye to drugs, say yes to good life, say yes to healthy life. And it is 58 for 1 after 4 overs. They are still 46 or 47 behind. They're going at the rate of 37 runs behind from 96 balls. 16 overs are going to come. Azan is again going on. We have different timetable here.
Glorious again. Wonderful. Beautiful. Fair and lovely. Crunchy munchy. Hey Mansoor, have you heard crunchy munchy? That is called the crunched through extra cover. Exactly. Knelt down on one knee. Well, it reminds me of that tasty confectionery of Just Bukhara. Well, Tanveer Pandit, if he's hearing we guys, I would definitely love to taste that. The next one, what was that? Khalid Butt isn't happy. It's going to roll away, and into the fence for 4. 2 into Khalid Butt isn't happy. This over, a white start with 2 byes, then a dot and a boundary coming. Just Bukhara 4. It should be 85 now. Second boundary of the over. It should be, yeah, it is 85 now. It makes it 10-11 of the over as of now. Waits for the ball. Plays it close to the body to long on area. Is it long on? Yes, there is a fielder. There is man stationed at 96. 10 away. Sultan Warriors. After 5.5 balls. They have ample time. They have all the time in the world. And JK Warriors need special miracle to prevail. Oh, Butt is bowling to his lad. Captain to Zishan Ali. In other tournaments, they are the counterparts. But today, they are up against each other. Let's see how he's going to bat. 10 away. 2 big shots. And they are going to be on the line. Zishan drives it. Pass to the captain in the follow through. He's wearing a smile on his face. Khalid, only wicket falling at 39. That was Asim Bashir. 87 for 1 after 6 overs, including 13 extras. बिल्कुल जहां खाली 8 रनों की अब ज़रूरत है, हालांकि आपने रन रेट को सुधारने के लिए यहाँ थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ा सुल्तान की टीम को, यानी कि आपने देखा होगा पिछले मैच में और किस तरह से बिल्कुल अपने वही तो है अपने रन रेट जो इम्प्रूव करने के लिए या सुधार लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए या तेज़ खेलना था सुल्तान को, और सुल्तान के बल्लेबाज ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। अच्छे बल्लेबाज हैं, आज नए नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला और ये एक वाहिद एक ऐसी टीम है जिसमें हर साल नए नए और टैलेंटेड खिलाड़ी आते हैं। एक और बड़ा स्ट्रोक और गेंद एक टपा खाने के बाद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। अब 4 रन जीत से दूर सुल्तान की टीम। 22 गेंदों में 52 रनों की साझेदारी फरहद गनी मैदान के अंदर जीशान अली के साथ, और जीशान ने अच्छी बल्लेबाजी की, 21 रन बनाए। फरहद ने भी और एक और बड़ा स्ट्रोक, इस बार तो दूर जाएगी। अंपायर के इशारे के इंतजार। जी हां, गेंद एक बार फिर यहां स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। तो इस तरह से यहां सुल्तान की टीम ने और 6.3 ओवर की गेंदबाजी में और इस मैच को अपने नाम कर दिया। हालांकि 6.2 ओवर की गेंदबाजी मेरे ख्याल से एक छोटा लक्ष्य मिला था, अपने वो जो रन रेट है उसको सुधारना था। आज मौका मिला, उस मौके को नहीं गवाया सुल्तान की टीम ने। So that's it we have for you from match number 2. Sultan Warriors prevailed by 9 wickets. We'll be back tomorrow. Until next time, Assalamu alaikum. Fi amanillah.